Hey, what's up cricket fans? Welcome to another episode of Reverse Swing, the cricket show, और मैं हूँ आपका दोस्त अहमद और आज हम आपसे बात करेंगे about the third ODI between England and Australia. It is the series finale, apparently also the series decider. जैसे आप लोगों ने फॉलो किया होगा, first match जो है was won comfortably by Australia. A couple good batting knocks by Stoinis and Glenn Maxwell finally scored some runs on the tour. And splendid 100 by Sam Billings in reply, but in vain. Or I think Johnny Breast also contributed in that first match, but he hasn't really looked himself lately. We'll talk about that in a bit. अगर हम सेकंड मैच के बारे में बात करते हैं तो सेकंड मैच तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग गया और एक लम्हे के लिए ऐसा लग रहा था कि जो है वो पाकिस्तान की टूर याद आ गया इंग्लैंड वाला, जब सारी कहानियाँ हुई थी और सारी मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग वगैरह की सारी बातें हुई थी, क्योंकि जिस रेट से ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स गिरी थी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था. वेरी इंटरेस्टिंग सैट. ऑस्ट्रेलिया आई थिंक नीडेड अबाउट 88 टू विन. They had 8 wickets in hand and about 19 overs to spare and to go, and wicket ऐसा लग रहा था कि मैं सनी देओल की मूवी देख रहा हूँ. एक सीन उनका बड़ा काफ़ी मशहूर है, बट दाद देनी चाहिए कैप्टन मॉर्गन को और उनकी कैप्टनसी को. आई थिंक spectacular job. He was working with the way he organized his overs was amazing, right? He bowled his two main bowlers, Archer and Vokes, at the middle of the innings, and he left his two other bowlers. Actually, काफ़ी भरोसा कर लिया उन्होंने दोनों करण भाइयों के ऊपर, मेरे करण और रिजॉन, मेरा सैम करण एंड टॉम करण के ऊपर, with a sprinkle of Adil Rashid's overs. बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कैप्टन के लिए ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देना अपने की प्लेयर्स को. इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर दोज की प्लेयर्स टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सिक्यूट, राइट. जो आर्चर और वोक्स ने किया, स्प्लेंडेड bowling performances by both. They stuck to the game plan and they got the wickets and eventually got the victory for England. अगर हम बात करते हैं, so one thing I really want to focus on that कि कैप्टन मॉर्गन की कैप्टनसी के बारे में बहुत ही डेयरिंग डिसीजंस लेते हैं काफ़ी, और थोड़ी सी इनकी जो है सिमिलरिटीज़ नज़र आती हैं बिटवीन द कैप्टनसी दैट पैस मैकलम यूज्ड टू डू फॉर न्यूजीलैंड. So it's good to kind of see that aggressive mindset is still out there. If you want to remain competitive in today's cricketing world, you need a captain that is willing to take those risks, right? So I hope कि हमारे जो नए कप्तान हैं बाबर आजम, वो भी थोड़ा सा कुछ इंस्पिरेशन लें चीज़ों से. बात करते हैं थर्ड मैच की जो कल है. तो जो हमें खबर मिली है, इट्स फ्रेश पिच, सो दैट्स प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम इन द सीरीज़. आई थिंक सेकंड मैच इवन T20 सीरीज़ की जो हुई थी उसमें भी कुछ जो थे वो पिचेस वापस इस्तेमाल की थी. तो फ्रेश पिच आई थिंक मोस्ट लाइकली शुड हेल्प द बैट्समैन इन रिगार्ड्स के थोड़ी आपको बॉल की जो बाउंस वगैरह जो पेस जो होती है, लेंथ होती है, आपको थोड़ी सी इवन आनी चाहिए, थोड़ा आपको ज़्यादा सरप्राइज नहीं होनी चाहिए इन द सेंस कि थोड़ी कुछ बॉलें बैठ गई थी अगर आपने मैचेस में देखा होगा, जिससे काफ़ी LBW विकेट्स या बोल्ड के भी डिसीजन आए. अगर हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं, वन एरिया ऑफ फोकस फॉर देम इज डेफिनेटली गोइंग टू बी बैटिंग, राइट. दे हैडंट प्लेड एनी कंपेटिटिव क्रिकेट इन द पास्ट 6 months एंड इट्स डेफिनेटली शोइंग. एक जो इम्पॉर्टेंट उनके लिए पीस मिसिंग था फर्स्ट और सेकंड मैच में, वो था स्टीव स्मिथ. They're without a doubt the best batsman that Australia has to offer today. He did not play the first 2 matches because before the first match in a practice session he got hit on his head by a bouncer. So concussion protocol tha, he had to kind of follow the protocols and make sure that everything was good to go. So sounds like jo hame khabar mili hai ki Steve Smith is good to go, but maybe Australia may not want to risk him, but the series is on the line. England hasn't really lost a series I think since middle 2000s. So in England, so let's see क्या होता है. Maybe Australia may want to take a chance, and if Steve Smith comes back into the mix of things, then it definitely bolsters the Australia batting lineup. Who gives away a spot? I would think probably Marcus Stoinis. He hasn't really bowled much. As I said in my previous videos, I do kind of view Marcus Stoinis as a batting all-rounder, but he has only bowled a couple overs in both of the matches. He gave about 15 and 20 in the second match, and then from a batting standpoint, he scored 43 in the first one and about 9 in the second one, right? So hasn't really contributed much, but English thodi zyada hogi. But I think most likely he will be the one that will make way for Steve Smith.
I think Maxwell probably stays in the squad just to have that added option of having an off spinner. He's an excellent fielder, everybody knows that. Plus, I think he scored about 70 odd in the first match as well. So, I think Maxwell stays. And then Mitch Marsh has been bowling in the depth of the innings, and also has been batting pretty decently, right? अगर आप T20 वाली सीरीज भी याद होगी, इन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी 30-20 आया में. So I think Marcus Stoinis for Stephen makes the most sense. Bowling side, I think Australia's been doing decent. Probably need Pat Cummins and Mitch Starc to step it up more. Spectacular bowling performance by Hazelwood. मैंने बात की थी मेरी पहली वीडियो में when he played the T20 का एक मैच उन्होंने खेला था. बड़ा अच्छा लगता है जब एक इस टाइप का बॉलर आपको परफॉर्मेंस देता है. Hazelwood is a big name. He gave about like 25 runs in the first match, I think 20 something or 26 runs in the second match as well, right? So he's been bowling good, and Zampa is back to his form. He's picking up wickets, so let's see what happens. जहाँ तक रहती है बात आपकी इंग्लैंड की, one concern for Australia is definitely the form of David Warner. So he hasn't really scored much, और लग रहा है कि वो जोफ्रा आर्चर के बन चुके हैं, क्योंकि उनकी मेरे ख्याल से लास्ट 4 innings में the last 2 T20Is and the first 2 ODIs जोफ्रा आर्चर ने बिल्कुल फंसा के रखा हुआ है. बिल्कुल he's not getting into his comfort spot. So hopefully tomorrow we don't see a oh Jesus kind of reaction from Warner जो हमें नज़र आया था पिछले मैचेस में जब he nicked one back from Jofra Archer, and hopefully he was able to score runs. मज़ा आता है जब he gets into his zone, starts scoring runs, and aggressive David Warner is good for cricket. बात करते हैं हम England squad के बारे में. I think slight cause of concern. Their big guns haven't really fired yet. Yeah, Johnny Burstall scored like 70-80 in the first match. But अगर आपने वो मैच देखा हो एक true analyst की तरह तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ही बेकार और बहुत ही फारिग इनिंग्स थी हैं. एंड में उन्होंने मेरे ख्याल से जब 80% अपनी सारी बॉलें खेलनी थी तब उन्होंने शॉट्स मारने शुरू किए थे. बट even at that time, I mean, there was not a lot of confidence that showed in that innings. And he was just sticking around with Sam Billings, who I think on that day when he scored that 118 plus or something, I mean, he scored a spectacular knock. Very disappointed. Sorry for him that it did not, that it came in a losing cause. But Johnny Bristow next match gone out on one. Jason Roy hasn't really performed much. Jab se apni side strain injury ke baad aaye hain, and Josh Butler, after missing that 3rd T20I, he got promoted. I think he came to bat at number 6 before Moeen Ali came in the first ODI, and I think his match maybe he came before Sam Billings, if I'm not, in the second one. So he hasn't delivered as well. So maybe slight cause for concern. Joe Root came back for ODI, but वो ही अपना typical 30-40 करके out हो गए हैं. He needs to play with more responsibility. One batsman that just looked in good touch, even though the runs don't really show that on the scorecard. Once again, अगर आपने पूरा मैच देखा है या highlights देखे तो आपको ये पता होगा. The captain Morgan, I think, has been playing very aggressively, brilliantly. पहला मैच भी जो ऑस्ट्रेलिया हारी थी उसमें अगर आप देखते जिस तरीके से मॉर्गन ने आके एक frustrated जॉनी ब्रिस्टो के साथ बैटिंग की, और he made sure that he scored upwards of 100 strike rate. So at least he's in good touch. We'll see what happens. I think line from a bowling standpoint remains the same. अगर Mark Wood की इंजरी जो थी वो सही हो जाती तो maybe he'll come back, but I think Karan Arjun, Tom Karan और Sam Karan जो हैं हमारे दो भाई, उन्होंने अच्छी bowling कराई थी second ODI में, so they may get to retain their spot. Moeen Ali, I think, sits this one out. England may not want to tweak a lot, but let's see, who knows. तो ये तो था हमारा मुख्तसर तबसरा about England and Australia, the series finale that's going to happen tomorrow. Really quick, पाकिस्तान टीम के बारे में थोड़ी बात करते हैं. थोड़ी सी ये काफ़ी चीज़ न्यूज़ थोड़ी वायरल हो रही थी. हमने चांद नवाब को हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि भाई ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के जो है चीफ सेलेक्टर रोल के साथ. मैं ख़बर आई है कि जो है पाकिस्तान के मिस्टर 100 miles per hour द रावलपिंडी एक्सप्रेस जो है as being considered for the chief selector role of Pakistan, Mr. Shoaib Akhtar. Yes, so that will be a very, very interesting move and decision by PCB. अगर ये हो जाता है तो we will definitely do a special episode on that, because I definitely have a lot of opinions about this particular move, and I'm sure JD and others on our panel will have as well.
बट लेट्स सी, आई मीन आई थिंक आई वाज़न्ट श्योर कि हाउ ऑथेंटिक दिस रिपोर्ट वाज, कितनी वैलिड है, क्या है, बट इसलिए ज़्यादा हमने इसके बारे में इतना टाइम स्पेंड करेंगे नहीं। बट खैर अफवाह फैल रही थी तो हमने कहा अफवाह को कवर करना हमारा काम होता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस के बाद ही तो एक और अच्छी खबर ये आई थी कि पाकिस्तान का टूर लगने वाला है, एक्चुअली सॉरी जिम्बाब्वे का टूर लगने वाला है पाकिस्तान के अंदर। तो रावलपिंडी में जो है वो मैचेस होंगे 3 ODIs एंड देन द मुल्तान स्टेडियम इज़ गोइंग टू होल्ड 3 ODIs। सो ग्रेट न्यूज़ फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट। क्रिकेट इज़ डेफिनेटली कमिंग बैक होम इवन इन कोविड। डेट्स आई थिंक अभी तक अनाउंस नहीं हुई हैं, तो आई एम थिंकिंग मोस्ट लाइकली या तो ये PSL से पहले होगा या अक्टूबर में हो जाएगा या PSL के बाद होगा। सो जैसे हमें डेट्स वगैरह सारी चीज़ें फाइनलाइज होती हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे। ये तो था आज हमारा आपके साथ मुख्तसर चिट चैट सेशन ऑन व्हाट्स हैपनिंग इन द बिग सीरीज़। IPL भी स्टार्ट होने वाला है, उसकी भी प्लानिंग हम इंशाल्लाह कर रहे हैं आपके लिए। इंशाल्लाह आपसे रहेगी बात। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन रिवर्स स्विंग।